2024 में आप किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? How many of you are excited that we are entering into 2024? हाँ, या फिर एक normal energy है, same energy as regular days. So I was saying that we all are deciding, planning, marking our calendars, taking New Year resolutions, doing so many things, right? But ultimately, when after a couple of days, या फिर after a couple of months, we are back to our routines. We are back to our routine. So it's very important that, rather than planning your session, rather than planning your 2024 and, marking your resolutions, it's very, very important कि आप सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करें कि इस साल आप जो 2024 है, कि इस साल आप जो 2024 है, 2024 में आप किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? What is it that you are running behind? What is it that you are running behind? Now that has to be very, very precise. You have to be very clear with what is it that you're running behind. What के साथ आपको बहुत clarity चाहिए. ठीक है? One word में आपको answer करना है. There are some people who may be struggling with health. Some people may be struggling with career. Some people may be struggling with, relationships. So maybe X number of reasons. So सबसे पहले तो 2024 में आप अपना ये जो भी रेजोल्यूशन लेने वाले हैं, सबसे पहले आप देखें कि आपको 2024 से चाहिए क्या है. So let's say we are clear on what. We are clear on the what. Once we are clear on what, we must know the why, as I've always been saying. And that why has to be very loud and clear. It has to be very, very loud and clear. Why? आपका why जो है ना, please remember, why should be your passion. जुनून होना चाहिए, पागलपन. आप समझ रहे हैं? पागलपन मतलब सुबह 3 बजे भी कोई उठाए ना कि ये फाइल पढ़ना, ये लॉ पढ़ना. Yes, that's my passion. एथलीट्स को देखा है, सुबह 3 बजे भी भागेंगे. डॉक्टर्स को देखा है, उनका कोई रात और दिन नहीं होता है. दे आर जस्ट इनटू देयर प्रोफेशन. सो प्लीज अंडरस्टैंड कि व्हाट जो आपने डिसाइड किया है, व्हाट डिसाइड करने के बाद यू हैव टू सी द व्हाई. एंड जो वो व्हाई है वो होना चाहिए पागलपन. दैट हैज टू बी पागलपन. दैट हैज टू बी पैशन. यू आर पैशनेट अबाउट इट. हाउ मेनी ऑफ योर एग्जैक्टली मतलब बहुत ज्यादा आप जो है ना, मतलब आप दीवानगी के साथ जो है जुडिशरी क्वालिफाई करना चाहते हैं. यूजिंग दिस वर्ड, यू आर जस्ट मैड, बट यू हैव टू फील द पैशन. कैन यू फील द एनर्जी? यस, that energy has to be there, that you're going that level up, that there is no day, there is no night, there is nothing coming in your this thing, and you are just, आपको एक ही सीर दिख रही है, एक ही चीज दिख रही है, वो आपका पैशन है. और वो आपको ना दिन है, ना रात है, ना कुछ है. ऐसा वाला जुनून होना चाहिए. तो आपका 2024 जो प्लानर आज हम प्लान करेंगे, ठीक है, उसमें सबसे पहले तो आपने लिखना दैट आई एम मैड अबाउट बिकमिंग अ जुडिशियल ऑफिसर इन दिस ईयर 2024. इट इज डू और डाई सिचुएशन. Whatever you are passionate about, जिस भी चीज के लिए आप passionate है, build your profession around that. If you're passionate about arguing the cases, build your passion around it. Be an advocate. If you're passionate about doing justice, build your profession around it. Are you understanding what I'm trying to say? So if I put it on the screen, what I'm trying to explain is 2024 में अपना जो है ना पागलपन पहचानो कि किस चीज के पीछे you are going to be mad. ठीक है? All right. Once you have identified your passion, build your profession around it. Build your profession around your passion. I'm passionate about teaching. I can teach no matter what, no matter how many hours of time, how many hours of the day.
Abhi, I just have my daughter. Only that is the only, resistance. But before I had my daughter, I used to teach for hours and hours. If I tell you my routine, there are students, if you look into my like previous batches, I used to teach offline in Delhi, like, in some of the academies. I used to come back on my way in the vehicle. I used to teach online. I used to come back home and never used to, साथ में चाय भी चल रही है और पढ़ा भी रही हूँ. ठीक है. And my husband was here in like, उस टाइम पे उनका जितना काम नहीं था, he was all free with his work. And they all used to keep planning कि आज मॉल चलते हैं, दिल्ली चार्म्स जो है यहाँ चलते हैं, वहां चलते हैं. I said, I am not doing anything. You please continue with your plans because I am so passionate about teaching. It is just जुनून है वो, right? तो जो passion है ना, build your profession to be super successful. To be super successful in your life, you must build your profession around your passion. Now, once you start build your profession around your passion, तो पता है क्या होगा? What will happen? What will happen? Any idea? Eventually, you will find your purpose. किस चीज का purpose? Why you were born in this life? Why you were born in this world? Why did you come to this earth? You understand? You came to do justice. You came to serve the society. Or whatever it is, whatever it is. The purpose of life, you will eventually find out. That will be your purpose of life. ठीक है. सो अभी आप जितने भी बड़ी बड़ी लिस्ट, अब बहुत कंफ्यूजन है सब बच्चों में. मैम जनवरी कैसे मार्क करें, 1 जनवरी में क्या मार्क करें, 2 में क्या करें. पीपल आर, ऑल स्टूडेंट्स आर सेंडिंग मी ऑल द आउटलाइंस कि कैसे मार्क करें. नाउ मार्क करना जब हमने है ना, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिफोर यू स्टार्ट मार्केटिंग, बिफोर यू स्टार्ट मार्किंग योर कैलेंडर. You want to know what you want to understand. See, beta, before you start marking your calendar, as I told you, जब हम कैलेंडर मार्क कर रहे हैं ना अपना, तो हमारे पास क्या है? टू डू लिस्ट है. दिस व्हाट यू हैव, ऑल ऑफ यू. ये करना, ये करना, ये करना, ये करना है. आई गिव यू एन आइडिया. मेक अ नो टू डू लिस्ट. डोंट मेक टू डू लिस्ट. Through this declutter. टू डू लिस्ट से आपका जो है ना, वो लिस्ट इतनी लंबी बन जाएगी ना, और एग्जीक्यूशन कुछ नहीं होगा. टू डू लिस्ट जो है, इस पे हम काम करेंगे, बट आपको सबसे पहले काम करना है नो टू डू लिस्ट पे. प्लीज नो टू डू लिस्ट जो है, declutter them. It's time to take courage and say no. So in the year 2024, you have to have courage to say no to people. You have to have courage to say no to some extra conversations. You have to identify your time wasting habits. जो आपकी time wasting habits है ना, उनको आपने identify करना है. क्या no to do list में क्या क्या हम add करेंगे? We are going to add time wasting habits. Identify time wasting habits. Identify the energy draining obligations. ऐसी obligations जो आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन आउट करते हैं. क्यों? क्योंकि आप इस अर्थ पे किसी पर्पस के लिए आए हैं ना बेटा, तो उस पर्पस के लिए आपको 100% डेडिकेशन देना पड़ेगा बेटा. Do you understand? You have to align with these thoughts before you take up any resolution. Just randomly waking up and saying, oh, 2024, it's trending. Please believe in real life, not in real life. ये तो मेरा, I keep saying this. Reels बनाते हैं ना हम. Don't believe in real life. Please believe actually in real life. You know what? जैसे 1 January होगा ना, first week में every person is asking, what is your 2024 resolution? What is your 2024? हाँ, क्या resolution है इस बारी, क्या करना है? Please, Sana. So that is temporary basically. That is temporary. You need to have a good mindset and a good environment. So set this environment. You will tend to forget that जो भी हम आज कर रहे हैं, keep coming back to me. I'll keep giving you that energy. Keep noting these things down. Put them in front of you so that you don't forget them.
Keep reading them aloud. Don't read them धीरे धीरे नहीं पढ़ना है. You have to make sure that you are time wasting habits are just gone away. Energy draining obligations are just out of context. ठीक है. और क्या हो सकता है? Like I keep saying, people. Yes. People who don't vibe with your visions. Vibe with your visions. With your visions. I'll give you an example. See, there are two friends, very good friends. Okay? But they're doing two different things. बात क्या होगी? हाय, क्या किया, क्या खाया, हाउ वाज योर डे, कल क्या किया, आज क्या किया, घर पे सब कैसे हैं, ऐसे बात करते करते आधा घंटा चला गया, 1 घंटा चला गया, 40 मिनट्स चले गए, पता भी नहीं चला. एक ये कॉन्वर्सेशन थी. और दूसरी कॉन्वर्सेशन है कि एक ऐसा फ्रेंड जो खुद भी जुडिशरी की तैयारी कर रहा है या खुद भी सेम प्रोफेशन में, probably he is also into coach, I am also into coach, and then we both communicate. This I'm telling you with experience. Recently, I found a very good accountability partner. She has so many feathers to her cap. She is a multi-talented person, right? So when I spoke to her for 1.5 hours, and I found that, my mind is full of ideas. Full of ideas. तो वो मुझे लगा कि 1-1.5 घंटा मेरा waste नहीं हुआ है. Why? Because that is the lady or that is the female with whom my vision and my vibe matches. Are you understanding? So if you have such people around you who are successful or who are also, preparing for the same services or for the same profession or business, vibe with them. I'm not telling you कि रोज ही 1-1 घंटा बात कर रहे हो. Don't do that. Just to, probably I would say, rather than talking to those people who don't vibe with your visions, it's better to talk to those people who vibe with your visions. And if you don't have such, then you yourself are alone and good to go. Okay? But don't vibe with those people who don't align with your visions. So cleanse your calendar. It's very important that you clean your calendar. Irrelevant meetings, all those things आपने उसको जो है सारा कुछ क्या करना है आपने declutter करना है. So I would say that it's time to say no. All right? Up. It's time to say no. It's time to say no. And once you learn this art of saying no, यार आज बाजार चलते हैं, मुझे ये शॉपिंग करनी है, हाँ आज हमारे घर पे ये आ रहा है, लेट्स गो, है ना. हम नो करने, हमें लगता है यार उसे बुरा लग जाएगा यार, राइट, उसे बुरा लग. बट only people to whom you shouldn't be saying no is your close knit family, like your mother, your father. कोई health problems है आपके, your children, to which you can't, because we are social beings ना, we are humans. दया तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना. घर पे कोई बीमार है, आप बोलो मैम ने तो कहा यार, it's time to say no. Don't do that. So identify people on your fingertips. Brother, sister, बेटा, बेटी, मम्मी, पापा, इन लोगों को कुछ भी होता है ना, you should be readily available there. और फिर आपके करियर में कोई डिले होता है, it's a divine delay. Don't get disheartened. Don't get disheartened because God is there. आपके वो कर्मा अच्छे, I always believe in good karmas. सबसे पहला तो हमारा लाइफ में यही है ना काम. अगर हम एक दूसरे के लिए, हम अपने प्रोफेशन के लिए इतने पागल हो जाएं, इतने पैशनेट हो जाएं कि हम बाकी जो है ह्यूमन थिंग्स ही भूल जाएं, then there is no point, right? But you need to identify those people. सिर्फ उन लोगों को आपने जो है कभी भी नो नहीं करना है. You always should be readily available for them. But जब आप इन लोगों के लिए अवेलेबल हैं, आप फिर उस टाइम को कैसे कॉम्पनसेट करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. You will have to burn your night lamps. Are you understanding?
ठीक है. So my point is, in the year 2024, once you have identified your why, your passion, your junoon, and you're mad for it and up for it, then very, very important, start working on the I. I को मत भूलना प्लीज. I अपना भी ध्यान रखना, और किस तरीके से ध्यान रखना कि कभी लाइफ में ना ईगो को टच भी मत होने देना बेटा. I have seen such amazing, talented people reaching the peak of success and they come crashing down just because of this. Just because of this. So throughout the process of struggling to be successful and then in the journey of successful, please do not let the ego come near you. Always remember कि मैम ने एक हमें जो है ना ये चीज तो कही थी कि आई पे जरूर काम करना है. Always there is nothing wrong or bad in saying sorry. हम सब गलतियां कर सकते हैं, right? Always be humble. Be humans. Be humans. All right? And so be humans. That what do I mean by saying is कि whatever you are doing, please be watchful. It's very important to be watchful in your acts. Yes? Yes, be very, very watchful in your acts. And you all have no idea कि जिस चीज के ऊपर आप अभी काम कर रहे हो ना, what impact it's going to create in another upcoming years. You all, you know, I have the genius in the room only. You all are genius. And you all are only going to create that impact in others' life. Right? Are you understanding? Okay. And yes, before, again, you know, to be successful, it's very, very important that one must be disciplined. The measure of success will depend upon your measure of discipline. Your level of success will be determined by your level of discipline. Your level of discipline. Very, very important. आपका जो आप जितना भी आप आगे का प्लान कर रहे हो, बट अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हो तभी भी it won't work. Are you understanding? जितने आप डिसिप्लिन रहेंगे उतना ही the level will go up. Again, one last story that I would like to share. You want to listen? It's a very nice story. छोटी सी story है, ठीक है? So there is this saint, you know, there is this monk and he has superpowers. उसके पास monk energy होती है. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा meditation करता है, भगवान का नाम लेता है, तो उसके पास ऐसी powers होती है कि वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है ना, he can always give a correct answer to any question that anybody asks him. Okay, so he goes to this village and there are these villagers. वो क्या करते हैं कि एक माउंटेन टॉप है, वहां पे उसको एक छोटा सा घर दे देते हैं रहने के लिए, so that he can meditate also on that mountain top and he can stay there. So there are these two boys and छोटे बच्चे हैं, two children. ये आपस में कुछ प्लान करते हैं कि यार आज तो हम ना इस सेंट को गलत प्रूफ करके रहेंगे कि इसका आंसर जो है ना, he will not be able to answer. So what they plan is they take a butterfly and वो butterfly को ना अपने हाथ में रखते हैं और कहते हैं हम उससे ना 2 questions पूछेंगे. पहला क्वेश्चन कि हमारे हाथ में क्या है, और दूसरा क्वेश्चन कि वो जिंदा है कि मर गई है. अगर वो कहेगा जिंदा है तो हम बहुत जोर से दबा देंगे ताकि वो मर जाए, और अगर वो कहेगा मर गई है तो हम थोड़ा लूज छोड़ देंगे ताकि वो उड़ जाए. पर उसको आज हम गलत प्रूफ करेंगे. तो वो एक बटरफ्लाई पकड़ते हैं और बटरफ्लाई को लेकर जाते हैं सेंट के पास और पूछते हैं उससे कि हमारे हाथ में क्या है. तो ही सेज देयर इज अ बटरफ्लाई. ही सेज ठीक है, यू गॉट इट करेक्ट, बटरफ्लाई है. बट अब कहते हैं कि जिंदा है कि मर गई है, इज इट डेड और अलाइव? सो यू नो व्हाट सेंट रिप्लाइज,
आपके हाथ में. You understand? It's in your hand. So 2024, the calendar that you're marking, it's in your hand. You know, by the end of December 2024, the results are in your hand. Whether you want to crush it or you want to come out with flying colors.